So hello everyone. So this is Rashmi again. We are here once again with our batch 3 students. So successfully we have completed our third batch, that is batch 1, batch 2 and batch 3. And I want to invite everyone like Shubha, Himani, Puna, Sundri, Astha and Bhuwana is there and Shraddha is also there. She will join in few minutes. So I just want to know how your preparation are going on, because on the 6th October, we have the NTA examinations, correct? And we all are here and we all have attempted at least one time the NTA examinations. So this is a very high expectation from our end to our learners. You should crack at least NET, and I'm hoping for the JRF. But yes, for the JRF, this 10 days you have to work very hard, है ना? सो ये डिपेंड करता है कि आप इन द एग्जामिनेशन किस मूड में किस ख्यालों में आप डूबे नहीं और बस स्क्रीन पे आपकी नजर होनी चाहिए, सो दैट सी व्हेन आई अटेम्प्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट एबल टू सी द स्क्रीन केयरफुली, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं मैं बहुत स्लीपी मोड में थी, बिकॉज आई स्टडीड वेरी हार्ड और मैं सो नहीं पाई इन द 10 days ऑफ लास्ट 10 days. So before I will start talking to everyone, I just want to say one message. So see, these 10 days are very critical for everyone. But इस 10 days में it is very important कि आप अपने health का बहुत ध्यान रखें and you have to take a good sleep, because मेरे हिसाब से जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है. Just you need to practice mock test as much as you can and previous year question. इसके अलावा कोई भी नोट्स, कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखने की आपको जरूरत नहीं है, unless and until you are not getting stuck in any concept. So just Google that particular concept and just do the revision and mock test. जितना आप mock test लगाएंगे उतना you will start sitting 3 hours on the system, because yes, 3 घंटे बैठ के स्क्रीन पे देखना, एग्जाम देना is very difficult task. And again आपका कहीं ना कहीं वहां पे in the examination also ऐसा होता है कि आप 3 घंटे में यू आर गेटिंग टायर्ड. यस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन बातों का ध्यान रखें एंड उस हिसाब से आप एग्जाम को दें. तो दैट वाज फ्रॉम माय एंड, and I just want to ask few questions related to how we have taken the classes and what is your feedback and what are your expectations. So I will start with Shubha, because Shubha is one of my very old friend here and we are in touch from 2 years, I guess. So if you want to give the feedback or if you want to speak anything, Shubha, what is your performance level? आपको कितना enhancement हुआ from the previous आपने जहाँ से भी पढ़ा था, and what you want to say? So Shubha. I am very happy. What to say? Anything what you want to share? I haven't studied COA. I haven't studied. I haven't attempted any numericals of COA, but it is clear. I think I can. This time I will do the anything like direct mapping questions, pipelining questions that are clear to me. Then here notes are very very crisp and that will make last time preparation notes are very nice notes. I haven't prepared. I am attempting NET for few many years, but I haven't prepared in notes at all. That's a nice notes. I think that will clear my NET this time. I will not try. No, we are expecting from you. You will clear JRF this time, because I know you are very studious. तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपका JRF क्लियर हो, बिकॉज इट्स नॉट द मैटर कि आपने कितनी बार अटेम्प्ट किया. यस, सॉरी, ओ JRF के लिए एज नहीं है. My age. ओके. सो इट्स हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरे को तो नेट में भी आई एम वेरी हैप्पी.
सो इट्स जस्ट डिपेंड कि आपकी डेस्टिनी क्या है, बिकॉज इट्स डिपेंड कि आप अभी क्या करना चाहते हो, है ना. सो इट्स यस. सो थैंक यू शुभा. अगर आपको क्लासेस मेरे और आस्था के अच्छे लगे, बिकॉज हमने भी बहुत एफर्ट किया है फॉर टेकिंग द क्लासेस, है ना. सो वी आर होपिंग. आस्था, आपको कुछ बोलना है? यस, फॉर शुभा, मुझे ऐसा लगता है कि हर टीओसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कंसेप्ट्स आर वेरी गुड. तो जैसे मैं ऐसा समझती थी मेरे टाइम पे कि टीओसी मेरे लिए, मेरे जेआरएफ में दैट परफॉर्म्स वेरी वेल एंड बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया था टीओसी ने. एंड मैं वहीं पे शुभा को भी देखती हूँ, बिकॉज उनके भी टीओसी के कंसेप्ट आर वेरी वेरी गुड, बहुत क्लियर हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि काओ में, हाँ ठीक है, आप सीओ में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, और एंड अगर आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक. बहुत इजी एग्जाम है, कुछ भी नहीं है, बस आप ऐसे ही 10 days और मेहनत कर लीजिए. Okay, thank you. Okay, so I just want to ask few words from Himani now, because I will not take very much time. So Himani, what you want to say? Please unmute yourself. I guess you can listen. We are not. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. आप अनम्यूट करिए. So I guess there is might be कहीं पे कुछ technical problem. हाँ, यस, Yes. अभी सही है. She is speaking. Yes, ma'am. हाँ, yes Himani. Ma'am, आप audible हो या फिर नहीं? आप audible हो. You are audible. Okay, thank you, ma'am. मैम यहाँ पे आके मतलब कंबाइंड तो मतलब मेरा अच्छे से रिवीजन हो गया. मतलब पहले तो मेरा कोई सीक्वेंस नहीं था. आपका वॉइस क्लियर नहीं है हिमानी. आपका आपका वॉइस क्लियर नहीं है थोड़ा सा, बिकॉज आपने वो लगाया ना. यस. मैम अब सही है? हाँ, अभी क्लियर है. सही है. यस, नाउ इट्स क्लियर. तो हिमानी इज मेरा फ्रॉम हरियाणा. गोवा में, हिमाचल मैम. हाँ, हिमाचल. सो दैट इज व्हाई शी इज सो ब्यूटीफुल. यस, थैंक यू मैम. नहीं, आई जस्ट वांट कि मैम, आपको क्या लग रहा है कि मतलब परफॉर्मेंस लेवल आपका बढ़ा है विथ आवर कोर्सेज. आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब आपका जो प्रिपरेशन था वो नेक्स्ट लेवल पे गया या फिर वहीं पे रह गया. सो इट इज वेरी, यू कैन स्पीक फ्रैंकली कि कैसा लगा आपको. मैम सच में मेरा बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया. पहले तो मेरा जमा ही सीक्वेंस नहीं था बिल्कुल भी. मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं था. मैंने जैसे प्रिपरेशन नहीं की थी ना पहले अच्छे से, तो मैंने बीच बीच में से मतलब टॉपिक्स ऐसे उठा के ऐसे किया था. कोई प्रिपरेशन नहीं थी. बट हाँ, इस टाइम पे मेरा एक सीक्वेंस बन गया, एक फ्लो बन गया था, और बहुत अच्छे से पूरा रिवीजन हो गया. एक बार अब तो मैंने नोट्स भी बनाए हुए, अगर मैं दिखाऊँ. Oh my Oh, God. wow. See, please show That's that. really- एक बार दिखाओ. That was very nice. ये मैंने सबको सजेशन दिया, but I have not done yet. ये दिखाओ एक बार. That is very nice. In her points, please translate the points. No, what he told. मैम, आपने बोला था ना जैसे कि एक पॉइंट्स बीच में से इम्पोर्टेंट पॉइंट के वो सामने रखना था, डेली रिवाइज करना है. तो फिर मैंने ऐसे कर लिया था. मैंने वो लिखती गई और यहाँ पे चिपकाना, फिर वो साथ में रिवाइज. मॉर्निंग में एक बार उठ के पहले रिवाइज, और उसके बाद मतलब सच में मैम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है मेरी परफॉर्मेंस. दिखाओ एक बार बुआना को दिखाओ. वो बॉल दिखाओ बुआना को. No, it is very nice. Just I want to see. Yes, that's really great, हिमानी. आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है. आई होप कि आपका जेआरएफ क्लियर हो.
Please repeat what she told. No. Thank you so much, ma'am. Yes, yes. मैं भुआना repeat कर देती हूँ. So thank you, Himani. If you are listening and you are following the guidelines, see, because it's not about paid course or free course. It's about कि आप किसको follow कर रहे हो, correct? Because there are so many platforms जो बोलते हैं कि we are personally assisting, but I know they are not personally assisting, but we have a less number of amount of learners. So yes, we can focus one to one. कि हम एक एक पर्सन का कॉल अटेंड कर रहे हैं. वी आर गाइडिंग देम इफ दे आर गेटिंग स्टक, एंड इट इज नॉट अबाउट कि जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई नेट जेआरएफ, बिकॉज मुझे ये बहुत छोटा एम लगता है. नेट जेआरएफ नहीं क्लियर होगा तो आपकी लाइफ बंद नहीं होगी, बट यस इफ यू हैव डिसाइडेड एनीथिंग देन यू हैव टू गो फॉर इट, बिकॉज उसके आगे भी लाइफ है, मेरा ऐसा मानना है ना. तो अभी आप तो बहुत छोटे हो, तो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन हाई है फ्रॉम द हिमानी. सो क्योंकि आपको भी आपके बहुत प्लान्स है, मुझे पर्सनली मालूम है, तो आपके लिए मैं बहुत प्रे कर रही हूँ कि आपका जेआरएफ क्लियर हो एंड आप अच्छे से पीएचडी रिसर्च स्कॉलर सब आस्था के जैसे आप भी जाओ, and we have a good collection of a team, then definitely we will work after this examination, है ना. So thank you so much, Himani. And so I want Bhuana to come online and I will explain what Himani has told. हाँ हिमानी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी. Yes ma'am, yes ma'am. मैं थैंक यू बोल रही हूँ मैम. थैंक यू सो मच. आपने इतना अच्छे से गाइड किया हमें और मतलब इतने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, मतलब पूरा एकदम से क्लियर हो गई बातें. बहुत सारी चीजें थी जो मतलब क्लियर नहीं थी. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कि छोड़ दिए थे मैंने ऐसे ही, बट वो बाद में पता चला जब मैंने आपकी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट की कि नहीं ये बहुत ज्यादा कंपल्सरी है ये वाले टॉपिक्स. तो बस थैंक यू सो मच मैम. आस्था मैम, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Rashmi ma'am. Thank you. Yes, I just want Bhuana. Yes, Bhuana, please come online. And what, yes, and what Himani was telling, I will just translate in English. So she was telling, see, I know Himani from last 1.5 years, and she is in touch with me. And whenever she get stuck in her MTech or any another task of research, then she used to call me. So she is telling me, I am following your guidelines that you are giving me. So this she was telling, and definitely I told everyone to start making the last minute notes and just stick on the wall. So she has done that and I'm very happy for it. So see, because Shubha, Guna, Sundari, Bhuana, I personally feel that we are in so much of responsibility we have. So that's why we don't have so much of time in creating that type of notes and focusing on the revision. But yes, so I just want कि आप इस 10 days में, especially Shubha, Guna, Sundari and Bhuana, because I know कि you all are working, है ना. तो आप थोड़ा सा टाइम निकालें. एंड यस, इन द यस्टरडे वीडियो इटसेल्फ मैंने बोला है कि इफ यू कैन जन सारे सिक लीव लगा दो एंड जस्ट टेक अ लीव फॉर अ वीक, इंटायर वीक टेक अ लीव एंड जस्ट डू द प्रिपरेशन इफ इट इज पॉसिबल. यस, ऐसा ना हो कि आप छुट्टी लगा दो और फिर कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए. हाँ, तो इफ इट इज पॉसिबल देन, बिकॉज मैं पर्सनली जानती हूँ कि so many of assistant professors are nowadays taking a leave. And the reason is they are just telling to principal that we have to crack the examination, then we want a leave, and they are providing them the leave. So if it is possible for you, then please go for it, है ना. And just वो word हटा दो, next time we have to attempt again. No, there is no next time, because again 6 months I know responsibility is going to be double. वो कम नहीं होने वाला है, वो double होने वाला है. तो next time नहीं आएगा, because next time we have another things to do. So this time is the last time, and at least we have to crack NET. I'm not targeting कि हाँ JRF ही चाहिए, but yes, at least you should crack a NET, है ना. So personally मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हो जाना चाहिए सभी का. And I just want कि Bhuana, so if you want to say something for our classes with respect to Astha and me, then please say a few words. Yes, it is very helpful and very effective way you are conducting classes. For
if we take last minute notes, and everywhere you wrote in that page, this is PYQ, this is asked in 2019-18. I saw that pages in everywhere, and I search in your YouTube link and everywhere. Both of you have more patience when I am asking doubts and everything. Now ask clear, Mona, clear, Mona, clear. No, it's On the day you told Subha is very clear on TOC, on the day itself, Subha got clear points in TOC. Why I didn't get my points? So I search everywhere. So, like children, we look, we have a competition to clear our exam in a positive way. Yes. I know Subha is very strong when comparing to my studies and everything, I know. But even though we don't have any time to spend much in studies, we can refresh our subject knowledge yes. when comparing, when we are taking classes to our students. It will boost our energy and make more confidence in our subjects. In graphics, I Yes. don't know a single point in graphics, but nowadays I saw any questions now, I'm damn sure in graphics. In problems, I didn't know, I didn't work out much level. In theory concepts, I was very that much confidence increased. Okay. From the okay. past 2 weeks only I joined here. So I feel, I didn't see these YouTube videos in previous months and back. I was very bad to feel like that. No. If I was joined in early days, now I could get more points, more topics I can easily in No, few see, days. No. see, Bhuwana, don't think like that ki aapke still some topics are left, because Astha and me have already covered the most important topics, correct? Yes. So, and the topic that we have not covered in the classes. So I have not covered that topic because that topics are covered on the YouTube channel. And that Yes. videos are very important because मैंने बहुत मेहनत से उसको create किया है from searching so many research topics. So, and I personally know because from the Maharashtra set also, I can see the previous year question, around 20 plus question are the previous year question in the Maharashtra set. And already I was telling everyone, just go for the previous year question. So, Okay. so yes, and I know in the UGC NET examinations also, I'm just telling everyone 25 to 30 question will repeat from previous year question. They are not going to ask you the same question, but yes, the concept will be almost same. So 30 question is a very huge number. And I have not told this openly, but I'm telling right now on the Zoom meeting, see, it is the pattern, ki alternate topics they are asking. So just go for 2017 paper, 2019 paper. So these two papers are very important. 2017, 2018 and 19 2019. and 20. See, 2020, they are not going to ask any question from 2020. But 2017, 18 and 19, this 3-year previous year question is very important. So Okay. I personally know the question that has come in 2012, the same question has been asked in 2014, 16 and 18. So this is the pattern मैंने अपने time पे इसको देखा है. So that is why I'm telling you 25 to 30 question you will definitely get from 2017, 18 and 19. So that is why just if you see, if you are getting stuck in any question, like 10 to 15 question will be in the examination, जो सबके लिए tough होंगे. वो हर एक के लिए टफ होगा if anyone is coming, because वो क्वेश्चन ड्राफ्ट ही ऐसे होते हैं that you are not going to attend. वो कुछ भी उठा के पूछेंगे, like Satish is from machine learning and AI, so he has so many concepts related to machine learning. So if he will get any question from AI, then he can definitely solve. But if we have not much information about AI, then we cannot solve that question. Similarly, if Shubha is taking TOC to her students, so that is why she can solve any question from TOC.
So that depends ki from the artificial intelligence, machine learning, data mining, data warehousing, there are so many number of questions. So that is why from the artificial intelligence, I'm not telling this openly, but yes, from the 10 question, I will say 5 to 6 question they will ask from search technique. Definitely 5 to 6 question from the search technique and 4 question ऐसे होंगे जो out of the box होंगे. तो ये मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 15 to 20 क्वेश्चंस किसी को नहीं आएगा, बट यस दैट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बेसिक मजबूत है देन आप थोड़ा सा वहां पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट आस्था इज आल्सो टेलिंग यू कि यू हैव टू टारगेट 80 क्वेश्चन and out of 80 question your 60 question should be correct. Yes Astha, Yes. I'm telling Yes, the same ma'am. point. You have Yes, to just ma'am. target 80 question and from the 80 question आपकी accuracy होनी चाहिए 60 plus. Yes, definitely. Because किसी का भी because see 180 minutes में 150 question solve करना it is very tough. So NTA examination is easy but because की time frame is very difficult. 150 Yes. question in 180 पेपर minutes. बहुत लेंदी होता है. तो because वो हाँ तो वो चीज हाँ. है आपके लिए. Statement questions are there, no? Sorry. Statement assertion are there, no? Yes, That's, yes. So it will for take that more question, time to. for that question, you have to go for elimination method and you have to think कि how to solve the question, है ना? So yes. So if anyone has any doubt, Guna Sundri, you want to speak something, or if you want to ask anything. Actually, after a long time, around 7 to 8 years of gap, I have started my preparation. Actually, this 1.5 months, it has made me a lot to learn from you and Astha ma'am. So your smile and your voice, both of you, actually it made us to learn more things because that is the main motivation behind everything, ma'am. So that competition, that the things. I know personally, I have not followed many things what you have told due to the some personal reasons. Yes, But yes. I have started. Now I have completed most of the work. So I have started from yesterday. So probably I'll follow whatever you told. So day before yesterday, you have given one small schedule book. So I'll just start it. So Okay. I think it will give a good result for us. Thank you, ma'am. Thank you so much for all your efforts, both of you. Thank So you so happy. much. Thank you, ma'am. So, so Satish, if you want to speak anything, and how was your examination? मैम सेट एग्जाम तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है बिकॉज ऑफ दोस हायर एजुकेशन राधा कृष्ण कमीशन और वो सारे सो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है. सारे वो तुक्के नहीं लगे, 10 के 10 तुक्के गलत हो गए. बट पेपर 2 वाज लिटिल गुड, सो आई एम लेट्स होपिंग लेट्स. Okay, not an issue because I have seen the question of Maharashtra set, and personally I believe that is out of the box question, है ना? And that type of question UGC NET is not going to ask because there was some question that is not relevant for computer science aspirants. They are asking, I will not disclose what type of question they are asking, but yes, for the NTA pattern, we just मैंने जैसे सबको बोला, just go for 2017, 2018, and 2019. So this last week, you have 5 days. So my last my last guidance is for everyone. It's not about paid student and free students. See, so if today is I guess 28 and I guess it is Tuesday, है ना? So you have 5 days left. So in the 5 days, just complete 5 previous year question. That's it. 5 previous year question for the computer science paper 2 and paper 1 as well. आप सिर्फ CS का paper solve करो for paper 1. Don't think you have 82 subjects in the NDA and you have to solve 82 previous year question for paper 1. No, आप सिर्फ computer science का pattern follow करिए for paper 1 because in the paper 1 itself मैंने ये देखा है 2018 का question they have asked you in 2020. The options came in the question and the question was came in the option. So ये मेरा personal observation है. तो just take out time 3 hours daily
and just solve 150 question. And out of 150 question, the first thing you have to notice, because that is the previous year question, out of 150 question आपके कितने question solve हो रहे हैं. And if you should get 100 plus, अभी आपका 100 plus correct होना चाहिए in 150 question. And अगर 100 question नहीं solve हो पा रहे, then just revise your notes कि where you are getting wrong, कहाँ पे गलत हो रहा है. Because in this week I will upload some quick revision notes again. So जो वो आपको सिर्फ सुनना है and regular revise करना है. So that is the last I want to say information. But yes, मेरे दिमाग में जब भी कुछ आएगा मैं बताती रहूंगी आप लोग को time to time. And इस time पे बस पढ़ना है और कुछ करना नहीं है ना. Apart from the household things, apart from the college duty, apart from the anything else, just focus. थोड़ा सा काम को मैंने personally जब तैयारी की थी तो मैंने सारा काम अपने husband को share करना शुरू किया. No, you go for market, you go for this and this, I'm not going to do anything. So that is how I have managed so many things, and still I am managing the same concept. So I have divided my task. तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, है ना. तो आप भी थोड़ा divide करिए task को, and just think this is the last time I am giving money to the government for this NTA examination. We are not going to give any money, है ना. तो नहीं देना है अभी, next time नहीं करना है, because next time आपकी responsibility बहुत बढ़ जाएगी. So yes, I guess so this is the last instruction that I'm giving you. And still अगर मुझे कुछ लगेगा, and very important before winding up, see 3:30 PM पे मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए lessons बनाती हूँ, and that lessons are very focused for your NTA examination. तो at least पूरे दिन में 24 hours में आप half an hour निकालो. If you can't attend online, कोई problem नहीं है. Just take a target and complete that video by night, है ना. And again, one more important topic, Satish is from batch 1 and we have batch 2, batch 3 all students. So if you are getting stuck in any concept, just tell me personally, I will give you that video. Just go through that video and revise the concept. I have already given access to all the notes to everyone, है ना. And Satish and everyone, मैंने सबको बोला है कि किसी भी topic में आप stuck हो रहे हो, just tell me personally, I will share the video again. Just go through that video and again revise the concept. And still if you feel you are getting stuck, you want the classes, I am here, Astha is here, just drop the message in the Telegram. जैसे अभी मैंने Zoom session लिया है, similarly we will take a Google Meet session. Okay? I hope everyone clear. Thank you, Yes, ma'am. Thank you so ma'am. much, Your ma'am. words are And very yes, and energetic to us. yes, and again I am putting very much of effort in creating a mock test. So वो 2nd October को रहेगा. So just do the preparation. I will share the link for mock test and just attempt it live. Because if you are not attempting live, then वो competition नहीं आएगा आपको, है ना. Because it is very important कि आप 3 घंटे बैठे, timer लगा के बैठे and just start solving with the timer. अगर आप टाइमर के साथ नहीं बैठ रहे हो, अगेन एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चंस छूटेंगे. सो बिकॉज व्हेन आई एम टेकिंग द क्लासेस मैं टाइमर के साथ बैठती हूँ, एंड आई पर्सनली फील कि 2 मिनट से ज्यादा लगता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट यू डोंट हैव 2 minutes इन द एग्जामिनेशन टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. So that is why you have to increase your efficiency, time management and accuracy. ये 3 चीज पे काम करना है. So yes, we are about to finish because it is 3 minutes left. So I hope अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना. And at last, आस्था अगर आप कुछ बोलना चाहो तो प्लीज आप बोल दो. Then we will wind up. Yes, ma'am. Pipeline बस and यही- PLF needed, ma'am. Sorry, I can't. मैंने सुना नहीं. फिर से प्लीज रिपीट करिए. I guess Bhuwana was telling something. Pipeline and DLF needed, ma'am. Okay, okay. Pipeline. I will just drop me message on the WhatsApp. I will Okay, share. okay. Yes, yes. Astha, I just want to ask you हाँ. to say a few words, है ना? देखिए 10 days लेफ्ट हैं, ये आपको भी पता है. 10 से कुछ लेफ्ट है, 9 to 8 days. And just solve some previous year questions as ma'am said, and DI and रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. मैंने बोला था मॉर्निंग में आपको बेड तभी छोड़ना है जब आप DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने. So one previous year question means 100 question, है ना.
and just try to give some less time, मतलब आपको 2 hours से कम टाइम में करना है, ठीक है. Try to solve 100 question in 1 hour 45 minutes and 1 hour 50 minutes, बिकॉज आपको ये सोच के करना है कि कुछ टाइम आप यहाँ पे सेव करेंगे, वही टाइम आपका वहां पे कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज एग्जाम प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है. एंड सब दूसरी चीज, बी पॉजिटिव. वहां जाके कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है. एग्जाम क्रैक होता है, नहीं होता है, आपकी लाइफ वैसे ही रहने वाली है, चैलेंजेस और बढ़ जाएंगे इवन. तो कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है वहां जाके. जस्ट अपनी स्क्रीन पे फोकस करिए, क्वेश्चंस पे फोकस करिए और वही प्रेजेंट रहिए जहां आप एग्जाम दे रहे हैं. वही पढ़िए जो आप आपके दिमाग में वही चीजें चलनी चाहिए जो आप रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है. ये कुछ चीजें हैं, DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अभी से सॉल्व करना है एंड डेली सॉल्व करना है. और बाकी तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में सभी को. लेकिन Yes. मैंने पहले भी कहा था कि No, this is the biggest motivation. You should feel कि आपका JRF आ रहा है, so और Yes. या फिर नेट आ रहा है. Yes, so I have to crack. नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मेरा एग्जाम क्लियर होगा. This is the positive attitude. आपका एग्जाम क्लियर होना ही है. एंड मैं इसके लिए अभी से ही आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दे रही हूँ फॉर इन एडवांस. ओके, चलो, I guess And this all will the best. हाँ ये Thank you, end हो ma'am. जाएगा Thank you, Zoom session. And again Thank we you, will thank meet soon. अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, ठीक है. We all come with our net certificate for Asta Yes. marriage, no? yes, 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 Thank you, thank you. We all meet there, no? yes, Thank you, ma'am. definitely. Okay, thank you you so much, everyone. everyone. Just yes. Thank you, ma'am. just- Bye bye. Okay, bye bye Thank you everyone. so. Take care. Thank you so Thank you. much. Yeah, thank you so much everyone for joining.